Good morning, students. Today in this lecture, we are continuing from the last topic. We have discussed related to the queue system, one of the performance measurement in the queue system. The first one is the time average number in system L. So we have discussed it in detail in the last lecture. So let's continue with it. This is represented by L, and the estimated value for the time average number in system is represented by L cap, and we have here calculated the value is approximately 1.15 customers. So what we can conclude here, that the average number of customer in a system is approximately one customer. So the next thing in this performance measurement is that when we consider it as a long run time average number of customer in a system, so it means that we are considering it for a long period of time. So when we say that we are considering this time average number in the system, and suppose the time is very large, here we say that when the time is, let's say, approaches to the infinite, then we can say that the expected value that we are calculating here, or the approximate value for the L cap, is approaching to the exact value L. So this is the key point here. So from the nutshell, we can say that here with the long run time average number of customer in the system, L cap will be approaches to the L. So इस लाइन का मीनिंग की निकल के आ रहा है अपने को, इतने मीनिंग ये निकल के आ रहा है अपने को, व्हेन दिस टाइम विल अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी. The meaning of time approaches to the infinity means when we are considering the performance measurement for a very long period of time. So when we are considering it a very long period of time, then the margin of error will be reduced to approximately a zero. So that is why we are getting the value of L cap, which is closely to the exact value of L. So the next thing is, we have already discussed in the last lecture these two equations. So we can also calculate the value of L cap by considering the total area under the function, which is represented by here. We can calculate this area under the function, and we can compute this area. This will also be equal to this value. Okay. So the next performance measurement that we are going to discuss is the average time spent in system. The average time spent in system per customer, which is represented by a W. So here we are going to discuss average time spent in system per customer. So as the name said, here we are interested in to calculate how much the time will be spent by a customer on an average in the system. Suppose we are taking an example of, let's say, hospital. There are so many patients are coming to the hospitals and they are leaving from the hospitals, and suppose we are considering the time window, let's say from 9 a.m. To, let's say, 5 p.m. So we are interested in to calculate what will be the average number of customer or the average number of patients will be present at any moment in the hospital during the time period from 9 to 5. So this parameter W will reflect the approximate value of the customer will be present in the hospital, or the patient present in the hospital, if we are considering the example of the hospital. So how we can approach to this performance measurement? Let's say again we are starting with some few assumptions. Let's say we are simulating a queue system for, let's say, some period of time t. Let's say we are simulating a queue system for the time period of t, and then we can record the time each customer spent in the system during 0 to t. So we can say that we can record the time each customer spent in the system during
0 to t. Let's say, and the recorder time will be represented by, let's say, W1, comma W2, comma W3 up to Wn. So where n, we can say that n is the number of arrivals. N is the number of arrivals during 0 to t. So we can say that the average time spent in system, average time spent in system per customer is called the average system time. Average system time. So here we are saying that the average time spent in system per customer is called average system time, and it is we can calculate by simple ordinary average equation here, which is represented by a value W is equal to 1 over n. We are simply taking the average here, where I is equal to 1 to n, and Wi. We are simply adding all the time spent by a customer in the system and dividing by the total number of customers. So here we are representing it with a W cap, because it is the it is the exact value. So as for a stable system, what are the stable system? The system in which let's say the number of customers are very large. We can say that for stable system, as n approaches to the infinity. So why we are saying that it is a stable system? Because when we are considering the evaluations for a very long period of time, and we are considering, if we are considering it for a very long period of time, then the number of customers will also be increased who are coming to the system. And when we are increasing these parameters to near to the infinite, then we expected to get the more accurate result, as the margin of error will be reduced here. So we can say that when n approaches to the infinity, and we can say that the W cap will try to approaches to the exact value of W. So we can say that with the probability of 1. So here W is called long run average system. W is called long run average system time, or W cap will represent the normal average system time. So I will just show you the previous slide which we have discussed earlier, the notations used here. Here you can see that here the W, simply W means that long run average time spent in system per customer. Let's see here. Similarly, simple L means that the long run time average number of customers in the system, that we have discussed earlier. So in this way we can calculate the average time spent by system per customer. So let's take an example, which it will be more clear to us when we take an example here. So we are here, let me show you one picture here. Okay, so we have discussed already these things. Okay, so here this is the picture again. This is the same picture that we have discussed earlier when we are calculating the average time average number in system. So the same picture here we are considering in the when we are calculating the average time spent in system per customer. So here we can say that let's say there are 5 customers. How we come to know that there are 5 customers? Because this is the first arrival here, this is the second arrival here, this is the third arrival, this is the fourth arrival, and this is the fifth arrival.
and blue ones are representing the arrivals. Blues represent arrivals and the red one represent departure from the system. So let me zoom here. Okay, it will be more clear to you. Okay, so here we can say that we need to figure out what are the different time spent by individual customers. So here we can say that the W1 here, let me crop this picture to take into the sheet so that we can discuss it with the ease. Okay, so now it will be more clear to you. Okay, so here we can say that W1, what will be the value of W1 we have discussed earlier here. Let me show you here. Okay, so this is W1, W2, W3, Wn, where n is the number of arrivals, is representing the average time spent in system per customer, or the time we are recording the time for the individual customer here. So W1 will represent the time spent by the customer 1, W2 will represent the time spent by a customer 2 in the system, and the Wn here represent the time spent by a nth customer in the system. So same we are following here in this diagram here. So what will be the value for W1 here? W1 will be equal to, so W1 will be the time spent by the first customer. So let's see here, the first customer arrive at 0 and it will departure at 2. So it means that the time spent by the first customer is 2 unit. Okay, so the next thing is we are calculating here. It is very easy to calculate W1 and W5. So we can easily calculate W1 and W5. We will face a little difficulty when we are calculating here. So because these are the overlapping of the customers here, so we will calculate it later on. Here W5 for the fifth customer, the arrival will occur at 16 and the departure occur at 20. So we can calculate the time spent by is 20 minus 16 is equal to 4. So when we need to calculate the time spent by our customers W2, W3, W4, we have to calculate these. So easily we can consider it in more detail here. Let's say we can draw a one line. Okay, so this will be the line here. So here, let's say this is the T0. Let's say this is the 2. This is the 4. This is the 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, and let's say 20. So we are also marking with, let's say 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. Okay, so the first according to this diagram, the first arrival occur at T0. Let's say we are representing the arrival like this. Here is the first arrival and the second arrival occur at 3. So this will be the second arrival, and the third arrival occur at, let's say, at 5. The third arrival will occur at 5. Look at the picture here. Here is the A3. So the arrival occur at 5. And the next arrival occur at
7. The next arrival occur at 7. Okay. So after that there are the departures, and the एक arrival अपने को हो रहा है 16 देते हैं. So we will also mark the next arrival at 16. Okay. Now the departure will occur at let me represent here. This is the first arrival, this is the second, this is the third, this is the fourth, and this is the fifth one. Okay, the first departure occur at here 2. The first departure occur at here 2. So we are writing like this. Okay, the second departure occur at D2 at 8. The second departure occur at 8. So let's say अपन D2 ना represent कर रहे हैं, so D1 देना represent कर रहे हैं, so that we can easily guess these are the departures, these are the above are the arrivals. And the third departure occur at 10. The third departure occur at 10. The fourth at 14. Fourth at 14. And the fifth one at 20. Okay. Let's see here. So when we have calculated W1 is equal to 2, so how we have calculated? We have calculated departure minus arrival. So 2 minus 0, we have reached here the value of 2. So see here, so this is the arrival of the first customer. So we are representing, let's say, with R1, or we can represent with the A1 arrival. So A1 जेड़ा हैगा देखो A1 इथे arrive हो रहा है, इथे depart हो रहा है. The time gap is between them is 2. So that is why we have written here 2. So if the first customer arrive at 0 and departure at 2, it means the time spent by the first customer is 2 units. Second one, when the second departure occur at 3, the second departure occur at 3, and the second the second arrival occur at 3 and the second departure occur at 8. So this will be the difference in these timing will represent जेड़ा A gap होएगा अपने को लेते हैं, मैं इसे मार्क कर देना, जेड़ा A gap होएगा अपने को, this will represent the time spent by the customer second customer अपने को कितना time spend कर रहे हैं देखो, the second customer arrives at if we are writing here W2, the second customer arrive कितने हो रहे हैं देखो, एक arrive लिख रहे हैं, the departure लिख रहे हैं अपन. The second customer is arriving at 3 and the second customer is departure at 8. So W2 will be equal to 8 minus 3 is equal to 5. So we have calculated here W2 is equal to 8 minus 3 is equal to 5. Similarly, we will calculate the value for W3 also. So W3 the लिए करना पड़ेगा when the third arrival occur at 5. So इतने third arrival हो रहा है ना अपना देखो, and when the third departure occur at 10. So this is the departure for the third customer. So it means that the time spent by the customer in the system will be 10 minus 5. So W3 will be equal to 10 minus 5, 10 where 10 is representing the departure and the 5 is representing the arrival of the customer. So it will be equal to 5 units. Similarly, we will see the value for W4. So the fourth arrival occur at 7 and the fourth departure occur at 14. So this is the time spent by the system spent in the system by the customer fourth. So it will represent the time spent by the system by the customer. So it will be 14 minus 7 will be equal to 7. So now we have calculated all the time spent by the individual customer in the system. So let's see the definition again so that it will be more clear what we are calculating here. So we have started with how we can calculate the average time spent in system per customer. So here we said that we can record the timing for each customer
spending in the system from 0 to t, and these are represented by W1, W2 and W3 and up to Wn, where n is representing the number of arrivals or number of customers. So ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ W1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Wn ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ. So from the diagram we have the 5 arrivals, it means we have the 5 customers. So we have calculated the value for W1, W2, W3 and W4 and W5. So now we will calculate the simple average. So how we will calculate the simple average here? It will be represented by W cap. W cap is representing, W cap is equal to 1 over n summation I is equal to 1 to n, where Wi. So here n is 5, so we will write like this 5, and we are adding all these times that we have calculated here. So it means W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5. So it will be equal to, we have calculated the value for W1 is 2, the value for W2 is 5, value for W3 is again 5, value for W4 is 7, plus the value for W5 is 4. When we are adding these values, we will get 23 upon 5, and in fractions we get 4.6 unit of time. So what we can conclude here, the value for W cap is 4.6 unit time. It means that on an average, a customer spend approximately 4.5 unit of time in the system. So this is the value for the parameter W. The next thing, same here, I will show you the picture also. So W1 plus W2, the values are calculated here. I have shown you how these values are calculated in detail, how we written like 8 minus 3, 10 minus 5, 14 minus 7. So these are representing the departure minus arrival of that customers. So similarly, the way we have calculated the average time spent in the system, so in the same way we can calculate the average time spent in the queue also. The customer ne queue de kitna time spent kita. So you can calculate these values, and if you finding any difficulty, you can contact to me. So we will address those problems raised by the students. So next we are going to discuss, before we are moving to the real example, so that it will be more clear to use, we will here see the conservation equation, or it is also known as Little's law for the case of a queue system. So according to this theorem, so it is one of the most common theorem in the queuing theory. So according to this theorem, we can calculate we have three values. One is the average number in system. It is represented by L cap, that we have already discussed in the last lecture, and arrival rate is represented by the value lambda here, lambda, and the average system time that we have already discussed now, it is represented by a variable W. So according to this equation, if we have out of these three values, we have any two values, we can calculate the third one. So we need not to spend so much time as we have spent earlier in order to calculate the value for L as well as the value for W. We already measure of the timing, we already have the value for lambda. Lambda is representing the arrival rate. So generally we have the arrival rate with us, and if we able to calculate one of these two parameters, either L or W, we can easily calculate the another parameter with the help of a conservation equation, that is represented by L is equal to lambda into W. So the examples we have discussed earlier, so the examples we have discussed in the last lecture, the same example we have pursued in this lecture also. So in these examples we have n is equal to 5, it means we have a 5 arrivals, and t is, let's say, 20 units, we have a 20 units. So the lambda will be equal to, lambda cap will be equal to n upon t, 20 upon 5
It means on an average there will be a 4 customer per unit time. Sorry, it will be a 5/20. It is 1/4 customer per unit time. So this will be the value for lambda. So in this way we can calculate the value for lambda. So we have calculated L cap, that is 1.15 customer. In the previous slide I will show you, so that we have discussed here. Okay, so we have discussed this in the last lecture. So we have calculated the average number of customers in the system is 1.15 customers. We have also calculated the value for W in today's lecture. So that comes out to be 4.6 unit of time. So we have the value for lambda here. We have the value for lambda is 1/4. So we can easily calculate, let's say L is equal to lambda into W. So if we have the value for lambda, that is represented by 1/4 into, according to this formula, if we multiply the average system time, we have calculated earlier, that is 4.6. If you divide 4.6 by 4, what you will get? You will get the value 1.15, which is the value for L. L is representing the average number of customer in the system. It is 1.15. So how easily we have calculated this value, L is equal to 1.15, that we have calculated earlier from the example by discussing in detail in the last lecture. So let me show you here. So in this formula, by using this formula, we have calculated the value for L cap here, that is equal to 1.15 customers. So in nutshell, we can say that according to the conservation equation, so in the conservation equation we have three parameters. One is the L value. L is representing the average number of customer in the system, and the second parameter is the lambda. Lambda is representing arrival rate, and W is representing the average system time. If we know any of two parameters out of or among these three parameters, we can easily calculate the third one. So I hope it will be clear to you guys. If you face any kind of a difficulty in order to understand these performance measurement, you can contact to me at any time. So let's move to one example. That according to that example, the fundamentals will be more clear to you. Okay, so we are starting with one example. Okay, so I have already taken the example here. Okay, so let me zoom here first. So what is the problem here? Okay, so this is one problem that we are going to discuss. So suppose we want to simulate a queue system. This is a system here. These are the different conditions given to us. A doctor office has one nurse and doctor. So we are considering a one doctor office or maybe a small hospital in which we have a one nurse and one doctor. And second is patient arrives randomly. So the pattern of arrival of the patient is random in nature. So each patient first goes through a checkup with the nurse and then proceed for a full checkup by the doctor. So this is the pattern in which the patient have to go through in the hospital. So the third assumptions that we are taking here, the patients may have to wait before being served by the nurse as well as before being served by a doctor. So it means that if there is a more rush, if the service time is slow, the patient might have to wait being served by the nurse as well as being served by the doctor. So service priority here we are considering is the FIFO. The first in first out, because the patient who is coming first will be served first. The next thing is here the service time for a nurse is a constant value we are considering here, and the service time for a doctor we are taking it as a random value. So these are the distribution given here below for the time
फॉर द अराइवल, देखो दो अपने को चीज़ें इतने रैंडम ने, वन इज द अराइवल ऑफ द पेशेंट एंड सेकंड इज द सर्विस टाइम ऑफ द डॉक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज two random things are represented by these two tables. So this is the distribution for the patients who are arriving, time between the arrivals, and this is the distribution for doctor service time. So ये टेबल तो अपन को की पता लगता है, ये टेबल तो अपन को ये पता लगता है, देखो इतने की गिवन है अपने को भी दो कस्टमर ਜਾਂ दो पेशेंट ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 0.5 ਹੈ, अगर दो पेशेंट्स 10 मिनट के गैप नाल आ रहे हैं ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 0.3 है, अगर दो पेशेंट 15 मिनट के गैप नाल आ रहे हैं ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 0.2 है. On the same way we said that the service time for the doctor is random. So डॉक्टर एक पेशेंट ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ 4 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 0.3 है, अगर एक डॉक्टर पेशेंट ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 0.5 है, अगर एक डॉक्टर पेशेंट ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 0.2 ਹੈਗੀ ਆ. So here what we want to do here, we want to perform the simulation here in order to determine the average time a patient spend in the doctor office. Okay, so we want to calculate the value W here. Okay, so doctor's office from arrival till leaving means भी ਜਦੋਂ customer hospital च enter कर ਜਾਂਦਾ है ਤੇ leave कर ਜਾਂਦਾ है तो on an average कितना time वो spend कर रहे. So what we have given along with these assumptions, upon we given है we have only let's say 5 patients, अपने को 5 patients का data होएगा. So for the sake of simplicity we are doing the simulation for only 5 patients, and let's see how we can approach to this problem. Let me start with, okay, so what we are going to calculate here. सो सब तो पहला जो आप कुछ कैलकुलेट करांगे इतने, सब तो पहला आप कैलकुलेट करांगे एवरेज इंटर अराइवल टाइम. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज इंटर अराइवल टाइम, एवरेज इंटर अराइवल टाइम. सो मैं इतने लिख देना है ना ऊपर ही एवरेज. सो टाइम बिटवीन अराइवल इज नोन एज इंटर अराइवल टाइम, average inter arrival time. So it will be equal to, if we multiply these arrival between time with the probability, we will get the average arrival time. So we will multiply 5 into 0.5 plus 10 into 0.3 plus 15 into 0.2. So we will get here approximately the value will be equal to 8.5 minutes. This will be equal to 8.5 minutes. So इस 8.5 मिनट्स का की मतलब निकल के आ रहा है, देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0.5 ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0.3 ਹੈ. ਸੋ 8.5 ਮਿੰਟਸ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਰਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, वो कितना है 8.5 मिनट्स. जिमें इतने 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है. अगर आप एवरेज करनी हो भी एवरेज कितना गैप आ रहा है दो सक्सेसिव अराइवल्स के अंदर, वो कितना आ रहा है 8.5 मिनट्स. सो इफ वी, दिस इज द एवरेज अराइवल टाइम. सो दिस इज द एवरेज, इतने में लिख लेना एवरेज अराइवल टाइम. सो ये कितना आ रहा है अपने को 8.5 minutes. So what will be the arrival rate? Arrival rate, if we divide it with the 1, अगर आप arrival rate calculate करना होवे, अगर average arrival ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ divide ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 over average arrival time, average arrival time, so we will get the arrival rate. So it will be 1 upon 8.5, which will be equal to 0.1176 per minute, or we can say that customer per minute. ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਅਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ
पॉइंटा दे विच कस्टमर पर मिनट आ रहे हैं सिस्टम के अंदर। सो ये कुछ गल जी नहीं बनी। सो टू मेक इट मोर रियलिस्टिक we will convert this figure into a per hour. So if we convert into a per hour, we will get approximately the value. You can calculate 7.059 customer per hour. सो इतों अपन की कैलकुलेशंस निकल के आ रही ने। अराइवल रेट देखो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्डा के नाल। अराइवल रेट इज रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यू लैम्डा हेयर। सो लैम्डा का मतलब इतने अपने को कितना आ रहा है 7.059 कस्टमर पर आवर। सो इतों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं भी ऑन एन एवरेज एक घंटे के अंदर 7 कस्टमर हॉस्पिटल दे विच आ रहे हैं और 7 पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दीज फिगर्स फॉर द डॉक्टर सर्विस टाइम आल्सो। देखो सो डॉक्टर दा एवरेज सर्विस टाइम अगर कैलकुलेट करना हो आप एवरेज सर्विस टाइम सो कितना आएगा अपने को 4 इंटू 0.3 प्लस 8 इंटू 0.5। so this is the value 8, this is the value 0.5 probability plus 12 into 0.2. so we will get here the figure 7.6 minute. so this is the time spent by a doctor on an average on a patient. अगर आप देखना हो भी डॉक्टर 1 मिनट दे विच कितने पेशेंट देख रहे हैं। सो इट विल बी रिप्रेजेंट बाय द सर्विस रेट। द सर्विस रेट फॉर ए डॉक्टर, द सर्विस रेट आप देखो नोटेशंस पढ़िया सीगियां लास्ट लेक्चर के अंदर। मैं तुम्हें एक बार फिर दिखा देना। सो उत्थों अपन थोड़ा जिहा क्लीयर हो जाएगा भी व्हाई वी दीज नोटेशंस आर यूजिंग हियर। सो देखो इतने अपने को आ रहा है सर्विस रेट फॉर वन सर्वर। हु इज द सर्वर, हु इज गिविंग दी सर्विसेज। सर्विस रेट का मतलब की है भी आप जो भी यूनिट लै रहे हैं टाइम का, अगर आप सैकेंड लै रहे हैं, मिनट लै रहे हैं, आर लै रहे हैं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो कितनी सर्विस दे रहे हैं आप। ठीक है। सो इतने अगर आप हम देखो एवरेज सर्विस टाइम कितना निकल के आएगा 7.6 मिनट 7.6 मिनट्स। इट मीनस ऑन एन एवरेज डॉक्टर पेशेंट से 7.5 मिनट लगा रहे हैं। अगर आप डॉक्टर का सर्विस रेट कढ़ना हो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। सपोज अपना इतने डी ना रिप्रेजेंट करते हैं। डी मीनस डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। सो ये कितना आएगा इनू डिवाइड कर देंगे आप 1/7.6। तो ये जो वैल्यू आएगी अपन को निकल के इतने तुसी कैलकुलेट कर लेना इनू। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज। सो इट विल बी इक्वल टू it will be equal to 0.13157. so it will be these amount of customers per minute. so again these sounds weird भी 1 मिनट पॉइंट फ्रैक्शन के अंदर कस्टमर ਨੂੰ ਆਪਾਂ और पेशेंट ਨੂੰ डॉक्टर देख रहे हैं। so to make it realistic we are converting into per hour। अगर इस फिगर ਨੂੰ पर आवर कन्वर्ट कर लोगे तो ਇਹਦੀ वैल्यू आ जाएगी अपने को 7.895 कस्टमर पर आवर। सिमिलरली आप ये भी देखा सीगा। देखो इतने दी सर्विस टाइम फॉर ए नर्स इज फिक्स्ड दैट इज 7। द सर्विस टाइम फॉर ए नर्स इज ऑलवेज 7 मिनट्स। सो आप जो एवरेज सर्विस टाइम होएगा नर्स तो कितना होएगा 7 ही होएगा बिकॉज वो फिक्स है। सर्विस रेट कितना आ जाएगा नर्स का अगर अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/7। सो इट विल बी इक्वल टू 0.1428 कस्टमर्स और पेशेंट पर मिनट। अगर अपन आवर्स कन्वर्ट कर देने तो ये आ जाएगा 8.57 कस्टमर्स पर आवर। सो आर आप इस करके कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट भी अपन आइडिया लग जाए भी फ्रैक्शंस अगर वैल्यू आ रही है तो वी समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दीज फिगर्स। दैट इज वाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू पर आवर। हम देखो की हो गया। हम देखो अपने को मैं दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम ਨੂੰ।
अपने को गिवन सीगा भी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के कोल, सब तो पहला नर्स चेक करती है, फिर डॉक्टर चेक करता। ਜਿਹੜੇ पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, दे आर अराइविंग इन रैंडम नेचर एंड द सर्विस टाइम ऑफ ए डॉक्टर इज आल्सो रैंडम इन नेचर, बट जी नर्स देख रही है वो फिक्सड है। तो हुण आप देखना चाहते हैं भी पेशेंट ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो हुण देखो आप कह रहे थे भी जो अराइवल टाइम है वो रैंडम नेचर का है। तो इतने मैपिंग आप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ਜਿਹੜੇ भी आप रैंडम नंबर मान लो कोई रैंडम नंबर जनरेट किया, लेट से किसी ने एक्सेल यूज कर ली, किसी ने C++ का प्रोग्राम यूज कर लिया, मे बी वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम जनरेटर, वी कैन यूज एनी वन। लेट से अपने को एक नंबर आ गया, लेट से 53। सपोज वी आर जनरेटिंग द नंबर बिटवीन 0 to 99 and we get a one random number 53, and how we can map this 53 random number in order to calculate what will be the arrival time for the patient in the hospital, whether it will be 5 minutes, 10 minutes or 15 minutes. How we will came to know that from this one random number. So for these we need to map the random number with the probabilities. So that is why we have written here one extra column is mapping. So let's say अगर अपने को 100 रैंडम नंबर ने, तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ अगर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 50 रैंडम नंबर ने अगर 5 मिनट्स ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0.5 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 0 to 99, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 50 ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢਤਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 50 ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 100 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ 100 ਨੰਬਰਸ अगर अपने को पहले 50 ਦੇ कोई भी नंबर आता तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हाफ होगी ना प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज वाई ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 0 to 49, ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 30 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 तक। Similarly here 80 to लेके 99 तक। So out of these 100 numbers, ਹੁਣ देखो अगर out of 100 नंबर चों पहले 50 ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ 49 ਚ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0.5 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, 30 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 0.3 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। Similarly ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 0.2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। So in this way we can map these probability to the random number. In the same way for doctor service time we can map like this, 0 to 29 here, 30 to 79 here, and 80 to 99 here. So in this way we can map to the random number. And let's say here ਆਪਾਂ मैपिंग करती है random number ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ 1 ਹੈ, ਕਸਟਮਰ 2 ਹੈ, ਕਸਟਮਰ 3 ਹੈ, ਕਸਟਮਰ 4 ਹੈ, ਕਸਟਮਰ 5 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਥੀਸ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਫॉर ਦੀ 5 ਕਸਟਮਰਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਹੇਅਰ ਦੀ 5 ਕਸਟਮਰਸ ਐਂਡ ਫॉर ਦੀ 5 ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਨੰबर। So why we are generating the random number here, because in the problem they said that the arrivals of the patient is random in nature. So let's say you can use any random number here, maybe you get the different random number when you are running this program. Let's say we get the random number, let's say 60, 30, 42, 9 and 65. Suppose these are the random number here, and now next is the inter arrival time. So how we calculate the inter arrival time from these random number? Let's say the first random number is 60 and 60 lies here from 50 to 79. So here the 60 random number lies between 50 to 79. So the inter arrival time will be 10 minutes. So we will write here inter arrival time is 10 minutes. Again the next random number is 30. 30 lies between 0 to 49. So the random arrival time between the arrivals is 5 minutes.
Next is the 42. Again 42 lies between 0 to 49. So the time between the arrival is, or the inter-arrival time is again 5 minutes. The number 9 is also lies between 0 to 49. So the inter-arrival time is 5 minutes. Next is the random number 65. 65 lies between 50 to 79. So the inter-arrival time is 10 minutes here. So these are the inter-arrival times. If we are map these inter-arrival times on the time scale, let's say we have started with the time 0. The first arrival occur at, let's say, 10. The next arrival is occur at 15. If we add these inter-arrival times, the third occur at 20. The next one is occur at 25, and the next one is occur at 35. Okay. So now the nurse will be started to seeing the patients. So देखो फर्स्ट कस्टमर अपने को 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, टाइम 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। सो नर्स भी की करेगी, ਉਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ देखना स्टार्ट करेगी। ठीक है। सर्विस टाइम कितना नर्स ਦਾ 7 मिनट, ये फिक्स है 7 मिनट, इस करके ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 7 ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ। सर्विस टाइम फॉर नर्स इज 7 मिनट्स। सो फिनिश कितने ਤੇ करेगी ये 17 ਤੇ करेगी। ठीक है जी। लेकिन कस्टमर कितने ਤੇ आ गया अपने को 15 ਤੇ आ गया। सेकंड कस्टमर कितने ਤੇ पहुंच गया 15 ਤੇ पहुंच गया। लेकिन नर्स अजे फ्री नहीं हुई अपने को। सो नर्स ने कदों खत्म किया 17 ਤੇ खत्म किया। सो इट मीनस ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 17 ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਰਸ 17 ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 17 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸ ਨੇ 17 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ 15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, इतने वेट करना पिया, कुछ नहीं वेट करना पिया उन्होंने। अगेन नैक्सट दे विच की है, जो पेशेंट है वो 20 ते पहुंच गया, लेकिन नर्स किन्ने ते फ्री हुई है 24 ते फ्री हुई है। इट मीनस ये 24 ते स्टार्ट होएगा प्लस 7 31। पेशेंट नूं कितना वेट करना पिया, लेट्स से इहनूं आपां रेड दे नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे हां, वेटिंग नूं क्लीयरली दिख जाएगी आपां नूं। पेशेंट नूं कितना वेट करना पिया इत्थे देखो 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, तो 4 ਉਹਨੂੰ यूनिट ऑफ टाइम वेट करनी पी। नैक्सट वो स्टार्ट होएगा 31 के उत्ते, 31 + 7 38। वेट कितना करना पिया देखो 30, इतने मैं ग्रीन नाल कर देना 31 38 38 ते खत्म किया, 31 ते स्टार्ट किया सी नर्स ने, आया किन्ने सी 25 के उत्ते। सो वेट कितना करना पिया उन्होंने 6 यूनिट ऑफ टाइम उन्होंने वेट करना पिया। हुण देखो 35 ते नैक्सट पेशेंट आ गया, लेकिन नर्स किन्ने ते फ्री हुई है 38 ते फ्री हुई है। सो नर्स 38 ते फ्री हुई है, तो स्टार्ट किन्ने ते करेगी 38 ते करेगी। 38 + 7 इज 45 एंड कितना वेट करना पिया इस पेशेंट नूं 3 यूनिट ऑफ टाइम। ओके। सो हुण अगे हुण जो पेशेंट नर्स तो फ्री हो जाएंगे, फिर डॉक्टर को जाएंगे। ठीक है। सो डॉक्टर के लिए भी आपां नूं ओहदा सर्विस टाइम रैंडम सी, ओहदे लिए आपां नूं रैंडम नंबर लैणे पैणगे। लेट्स से जिहड़े रैंडम नंबर ने वो लै रहे हैं आपां 18 74 13 30 एंड लेट्स से 53। हुण देखो जिहड़ा पेशेंट है इत्थे वेटिंग टाइम कितनी होगी उसदी 0 होगी, आपां 0 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तुहानूं कोई भी। सो इट विल बी अ 0। हुण देखो नर्स ने पहले पेशेंट नूं फिनिश किया 17 के उत्ते, तो डॉक्टर किन्ने दा स्टार्ट करेगा 17 के उत्ते। ठीक है, डॉक्टर ने 70 के उत्ते स्टार्ट करता। हुण अकॉर्डिंग टू रैंडम नंबर 18 रैंडम नंबर लाइज कितने कर रहा है 0 to 29 के अंदर। सो डॉक्टर कितना टाइम लगाएगा 4 मिनट लगाएगा। डॉक्टर कितना टाइम लगाएगा 4 मिनट लगाएगा। आप सब तो पहले मिनट ही लिख लेने सर्विस टाइम के। 74 लाई कर रहा है देखो कितने 30 to 79 के विच डॉक्टर कितना टाइम लगाएगा 8 मिनट लगाएगा। 13 के कोरस्पोंडिंगली 4 मिनट लगाएगा। 30 के कोरस्पोंडिंगली 8 मिनट लगाएगा एंड 53 के कोरस्पोंडिंगली 8 मिनट लगाएगा। ठीक है जी। हुण देखो इत्थे की हो रहा है, आपां कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, चलो ग्रीन लै लेंगे। ओके। सो हुण देखो की हो रहा इत्थे, फस्ट पेशेंट 17 के उत्ते आया, डॉक्टर ने 4 मिनट उत्ते लगाए, किन्ने ते खत्म हो गया 21 के उत्ते। वेट कितनी करनी पई उन्होंने, कोई वेट नहीं करनी पई। ठीक है जी। उस तो बाद हुण देखो फिनिश डॉक्टर ने कित्थे करता 21 के उत्ते, तो पेशेंट किन्ने ते आया अगे 24 के उत्ते। तो हुण डॉक्टर नूं वेट करनी पई है, पेशेंट नूं वेट नहीं करनी पई। सो नैक्सट डॉक्टर ने 3 यूनिट ऑफ टाइम फ्री बैठ के 24 के उत्ते जो उहदे कोल नैक्सट पेशेंट आया वो 8 मिनट लगाए। ठीक है, 8 मिनट लगाने तो बाद डॉक्टर ने उन्होंने 32
ਦੇ ਉੱਤੇ फ्री करता। ठीक है जी, इत्थे भी उन्होंने कोई वेट नहीं करनी पई पेशेंट को। सो नैक्सट जो पेशेंट सीगा अपने कोल 31 ਦੇ ਉੱਤੇ आया देखो, लेकिन डॉक्टर कितने फ्री हो रहा 32 ਤੇ फ्री हो रहा। इट मीनस डॉक्टर कितने स्टार्ट करेगा 32 ਤੇ स्टार्ट करेगा। तो वेट कितनी करनी पेगी पेशेंट ਨੂੰ 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो 32 प्लस 4 मिनट डॉक्टर ने लगाए, किन्ने ਤੇ फिनिश किया 36 ਤੇ फिनिश किया। अगेन डॉक्टर जल्दी फ्री हो गया, पेशेंट लेट आ रहा। हम देखो पेशेंट 38 ਤੇ फ्री होया, सो 38 ਤੇ स्टार्ट होएगा। 38 प्लस 8 मिनट डॉक्टर ने लगाए, किन्ने बन गए 46 बन गए। सो वेट कितनी करनी पई उन्होंने 0 करनी पई। नैक्सट 46 के उत्ते डॉक्टर ने फिनिश किया, लेकिन पेशेंट कितने ते आ गया 45 ते आ गया। सो नाउ द डॉक्टर विल स्टार्ट सीइंग द पेशेंट एट 46। 8 मिनट डॉक्टर लगाएगा उन्होंने, तो कितने ते फिनिश करेगा 54 दे उत्ते। सो वेट कितनी करनी पेगी उन्होंने 1 मिनट। सो हुण नैक्सट देखो की हैगा, आपां ब्लैक दे नाल यूज कर रहे हैं। हुण आपां ये देखना चाहते हैं भी टाइम कितना स्पेंड किया डॉक्टर पेशेंट ने हॉस्पिटल के अंदर, वो कितना होएगा भी किन्ने ते अराइव किया हो। ए वाला देखांगे आपां कॉलम, किन्ने ते अराइव किया ते किन्ने ते फिनिश किया उन्हें ए वाले। ठीक है जी, हुण देखो जो फर्स्ट पेशेंट सीगा 10 के उत्ते अराइव किया, वो फिनिश किन्ने ते किया 21 के उत्ते। सो इट मीनस 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। सो नैक्सट देखो 15 के उत्ते अराइव किया, 32 के उत्ते फिनिश किया। सो 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17। Similarly 36 minus 20 is equal to 16। and next क्या होएगा 46 minus कितना आएगा 25। so 46 minus 25 is equal to 21। and next is 54 minus 35 is equal to 19। सो ये जो हम अपने को W कैप की रिप्रेजेंट कर रहा है, W कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ये, दिस इज रिप्रेजेंटिंग W1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग W2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग W3, दिस इज रिप्रेजेंटिंग W4, दिस इज रिप्रेजेंटिंग W5। सो W कैप क्या होएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 अपॉन 5। सो यदि आंसर कितना आ जाएगा अपने को लेते देखो, अगर आप सारे ऐड कर दें 11 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 19, ठीक है, ओवर 5। सो यदि वैल्यू कितनी आएगी अपने को 84 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू 16.8 मिनट्स। सो इट मीनस W कैप की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 16.8 मिनट्स। सो यदा मतलब की है ऑन एन एवरेज पेशेंट जोड़ा है हॉस्पिटल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट लगा रहा है, 16.8 मिनट है ना, ਇਹਨੂੰ 17 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 16.8 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਵਰੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, which is represented by value L, average, or we can say that the time average number in system, or in simple words we can say that the average number of customer in system, or we can say that the average number of customers in the system. So it is represented by L. So according to the conservation equation, the formula for L is equal to lambda into W. So जहाँ तक L आप इस तरीके कैलकुलेट कर सकते हैं, जिवें आप फस्ट लास्ट लैक्चर च किया सी, आप इन्हां दे अराइवल देखिए 10 ते हो रहा, दी डायग्राम बना लीए 10 ते अराइवल हो रहा, ठीक है, डिपार्चर 21 ते हो रहा। इन दैट वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। और द सिंपल सैकेंड फार्मूला की हैगा, हुण देखो अपने कोल जिहड़ी L की वैल्यू कितनी हैगी है, L की वैल्यू कितनी है देखो, L is representing the number of customers or the number of patient coming to the hospital. So L की जी वैल्यू हैगी अपने कोल 1176 मिनट। ठीक है, अराइवल रेट जो कढ़िया सब तो उपर ये वाला 8 कैलकुलेट किया ना, ये वाला
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1/8.5 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0.1176 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.1176 into the value for W is 16.8 which will be equal to the 1.98 customer। ठीक है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1.98 ਕਸਟਮਰ। ਸੋ L ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, L ਕੈਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.98। ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਟਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ in order to clear your doubts. In the next lecture we will discuss with the another topic. So this topic is end here. Thank you.